I closed my very first client for $5,000, which is very, very, very rare. My mentor, who I trained from, was actually, making at least 15 to 20,000 US dollars on a month-on-month basis, whose age was 21, 22. सो गाइज़ वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में गाइज़ आपको बहुत ही शानदार व्यक्ति से मैं आपको मिलवाने वाला हूँ। और गाइज़ आप लोगों का बहुत समय से मेरे पास क्वेश्चन आ रहा था कि यार चेतन भाई बहुत समय हो गया, कोई एक नया इंटरव्यू नहीं हुआ। तो ये इंटरव्यू में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और इस पॉडकास्ट के अंदर में हम आपके साथ में बहुत सारे सीक्रेट्स एंड इनसाइट्स रिवील करने वाले हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप भी डिजिटल इंडस्ट्री में कुछ करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार पॉडकास्ट ये होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें एंड हम स्वागत करते हैं यश भाई का। यश भाई आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। Thank you so much Chetan for having me. Thank you so much to audience. मोस्ट वेलकम। एंड ये ऑडियंस का बहुत समय से मेरे पास में डीएम्स भी आ रहे थे कि यार हमें यश सर चाहिए। तो फाइनली यश सर आ चुके हैं हमारे चैनल पे एंड आज हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं अबाउट डिजिटल इंडस्ट्री एंड डिजिटल स्पेस। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने से पहले मैं चाहूँगा कि यश भाई आप एक छोटा सा अपना एक इंट्रोडक्शन दें अपनी ऑडियंस को, जिससे हमारी ऑडियंस आपको और अच्छे से जान पाए, पहचान पाए। थैंक यू सो मच। So basically, मेरा नाम यश पटवेकर है and I basically run a digital marketing agency from Pune, India. So my digital marketing agency is basically Chetan, expanded into the whole of Asia. I acquire clients from the US and UK so that I can fulfill their business goals through Facebook ads, Instagram ads, through email marketing. Whatever basically the clients asks me on the plate. Sorry. So this is my way of working, that I have basically expanded my digital marketing agency to all corners of the world, sitting from the comfort of my house. या परफेक्ट। तो यश भाई जैसे आपने कहा कि आप डिजिटल स्पेस में हैं एंड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करते हैं, तो चलिए इस इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि व्हाई डिजिटल मार्केटिंग? आपने डिजिटल मार्केटिंग को ही क्यों चुना? मतलब इसका क्या रीज़न था इसके पीछे का? Chetan, if I may ask you कि why not digital marketing? If you think from your own point of view, Chetan, that any business which helps me to basically earn in dollars and pounds through the comfort of my home and reach any client through any corner of the world from the comfort of my home, why not? People, लोग इतना sacrifice करते हैं, sacrifice their family to basically go to abroad and study. Basically they sacrifice their entire life to study over there, to earn over there. They basically are away from their family all the time. Yeah, they definitely earn a lot of good money through dollars and pounds, but if I am getting the opportunity to do something online and basically have the privilege to earn in dollars and pounds through the comfort of my home, why not digital marketing agency? And if you also think, Chetan, getting into a marketing company, starting a marketing company through traditional methods would have been very difficult. I am actually obliged and I am really overwhelmed by the fact social media does exist. You think for yourself, Chetan, if we had to start a marketing agency through traditional methods, what were the platforms? There were banners on basically the roads that we see. There were television channels which costed a 30-second advertise literally takes around 50 to 60 lakhs. GTV and all of these people. Absolutely. 50 lakhs rupees on a month-on-month basis for a 30-second advertise. So you can think for yourself, for a newcomer to get into digital marketing, to get into traditional marketing was so difficult. So getting onto social media, getting on these platforms and allowing a common person to advertise about his or her business is a big privilege, I think. It's a big privilege. So that is the reason I entered into digital marketing. परफेक्ट। ये चीज़ आपने एकदम सही कही कि एक अगर कोई नया व्यक्ति है जिसने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि वो ट्रेडिशनल मेथड्स के थ्रू अगर उसका एडवर्टाइज करना चाहता है। बिकॉज ये बात एकदम सही है कि 50 to 60 लाख रुपीज़ लगते हैं अगर हम टीवी में अपना एडवर्टीजमेंट दिखाना चाहते हैं, वो भी ओनली 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स का हमारा एडवर्टीजमेंट होता है। तो ये चीज़ तो आपने एकदम सही कही और बहुत ही सही लगा मुझे। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे
आपकी मतलब आपने कैसे स्टार्ट किया और आपको कैसे पता चला इस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में, एंड आपने इसमें एंटर कैसे किया? मतलब लाइक पहले तो हमें पता भी नहीं था, जब हम अर्ली अपने लाइक हम जब छोटे थे तो हमें इतना पता भी नहीं था कि डिजिटल स्पेस में कुछ हो सकता है या हमारा करियर बनेगा डिजिटल स्पेस में। तो आपको इसके बारे में कैसे पता चला और कब आप इस फील्ड में एंटर करें? एब्सोल्युटली, एज यू सेड चेतन, की मतलब मुझे भी इतना आइडिया नहीं था कि डिजिटल मार्केटिंग मतलब होता क्या है। मैंने बहुत टाइम पहले सुना था ये वर्ड, बट मैंने कभी रिसर्च नहीं किया था इस पे, और ना ही मुझे इसका मतलब असली मतलब मालूम था। इसे लोग मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी भी कहते हैं, SMMA। So I did not know what was SMMA actually. Social media marketing agency was, very confusing to me at the first. But if you remember, in 2018 and 19, there was a person who invented digital social media marketing agency. His name was 𝙁𝙧𝙗𝙗. I used to basically follow him on Instagram, and I used to basically, see his videos, see what social media marketing agency was. I got a lot of information from him. I, saw that he was also teaching to his new students that how do you start a marketing agency from your home. But again, how are you going to, you yourself are not matured enough to understand what is digital marketing. How are you going to invest into a person who is sitting there in the US and basically, teaching what is digital marketing, what is SMMA. So it was very hard to believe for me. And the price of his coaching program to start all of these things were about $1,000. Now, we being teenagers, 18, 19 years old, we're not going to trust an outsider basically who is teaching something legit. But, you cannot have the confidence in him to, spend 75, 80,000 rupees on a coaching program, which someone who's doing from outside India. So, I did not buy his program, just like, a lot of people did not, because it was really hard to believe that, this can be done. But after some time, I actually, started, I was, starting to look for I was starting to look for businesses which were in early trends, which were, booming. So at that point of time, I actually met a person through, a mutual connection who was doing digital marketing. And just when I, dig deep inside, I also got to know that it is a space, it is a high ticket space where you can actually earn legit money through the comfort of your home, through the comfort of your working times, and this can be actually made into a career. My mentor, who I trained from, was actually, making at least 15 to 20,000 US dollars on a month-on-month basis, whose age was 21, 22. So, having this traditional type of businesses right now, which my father, which your father, which everyone's father, or the traditional job that everyone's father used to do, to basically earn the money and get it into our house, to run the house. So that was seeing this kind of money, seeing these kind of basically privileges, features that got me into digital marketing, and that allowed me to basically why not just we can try this, and nothing to lose. If I'm also going to lose something, I'm going to lose some of my time, some of my investments. I always think that money is going to be spent in the near future. पैसा तो इधर ना उधर spend होना ही है. Why not spend it in a way, spend it in a path where I can see hopes from. Buying a 50,000 rupees mobile is also expense, but buying a 50,000 rupee coaching program is your investment. Your investment is going to make you somewhere down the line in the future. So जैसा कि भाई आपने कहा 𝙁𝙧𝙗𝙗 के बारे में, तो हमने भी उनको एक समय था हम बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे उनके सारे यूट्यूब वीडियोस, एंड मेरी भी जर्नी कुछ ऐसे ही स्टार्ट हुई थी कि पहले मेरे को पता ही नहीं था डिजिटल मार्केटिंग स्पेस के बारे में कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। लेकिन धीरे धीरे करके यूट्यूब के बारे में यूट्यूब में हम लोग रिसर्च करने लग गए, यूट्यूब में देखने लगे कि यार क्या चीज़ें हैं, क्या है। तब मुझे ब्लॉगिंग के बारे में पता चला, यूट्यूब से पैसे कमाने के बारे में पता चला। एंड मैं जब एकदम टीन में था उस समय में हम लोग यूट्यूब वीडियोज़ बनाते थे। मैं अपने दोस्तों के साथ जाता था एंड जाके यूट्यूब वीडियोज़ बनाता था, एंड ऐसे करते 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 बहुत से इन्फ्लुएंसर्स के बारे में पता चला। एंड कहीं ना कहीं ये जो बिजनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन लोगों ने हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है। चाहे आज आप विवेक बिंद्रा की बात करें, चाहे आज आप 𝙁𝙧𝙗𝙗 या डैन लॉक की बात करें, इन लोगों के चलते हमें इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस मिला कि आज हम कर पा रहे हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग स्पेस में आ रहे हैं, एंड वी आर मेकिंग मनी। So I'm really grateful to all the people who got this field basically over here. Otherwise I would have been just a normal person
into a traditional job, making peanuts for myself without having the luxury of time, without having the luxury of comfort. एब्सोल्युटली बिग शॉट आउट टू दैम. एंड मैं तो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को दिल से बहुत ज़्यादा फॉलो भी करता हूँ एंड आई लव दैम सीरियसली. सो लाइक अब यश भाई, अब थोड़ी से हम आपके सीक्रेट्स जानना चाहेंगे एंड हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती है आपके सीक्रेट्स. अब हमने ये जान लिया कि क्यों आप डिजिटल मार्केटिंग में आए, कैसे आपने डिजिटल मार्केटिंग में आपने एंटर किया एंड सारी चीज़ें. बट अब हम ये जानना चाहेंगे कि आपने अपना फर्स्ट क्लाइंट्स कैसे आपने टैकल किया. एंड क्योंकि जब हमारा फर्स्ट क्लाइंट होता है ना, वो हमेशा हमें याद रहता है कि कैसे हमने उनको क्लोज किया और कैसे हमने उनको टैकल किया, कैसे हमने उनको सर्व किया, क्योंकि उस समय हमको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ नहीं है. तो आप बताएं कि आपका फर्स्ट क्लाइंट आपने कैसे पिच किया था एंड क्या उसकी स्टोरी रही थी. अरे चेतन भाई, it was an amazing story. I believe myself. Basically what had happened, I started digital marketing and I started with actual work to reaching out to people through different platforms, through LinkedIn, through Instagram, through Facebook. And just like an ordinary kid, I also was facing a lot of problems in connecting with those people, because once we start doing something, we do a lot of trial and error, and that is what teaches us that what is the correct way, what is the wrong way. So tackling through a different platforms, sending cold DMs to people, sending cold emails to my prospects who were really interested. So what had happened is, after doing a lot of hard work, I did understand that a person cannot basically trust me overnight online. I have to basically build trust. I have to build a lot of rapport with the person, educate the other person with a lot of insights on how digital marketing, how online marketing can at least 10x their business from their current position right now. So हुआ ये था चेतन कि I reached out to a client just like all the other clients, and I started this follow-up sequence, because all the audience who are seeing this is basically, we have to understand the money is in the follow-ups. No client is going to trust us overnight online. We have to build this trust, this scenario. We have to educate them with so much of insights on digital marketing and show them that this is a legit platform which through you can advertise and get your business to another level. And you will not believe, Chetan, after doing this, after having a follow-up sequence for at least 1 month, following up with the same client, giving them a lot of valuable content on how digital marketing can help them, I closed my very first client for $5,000, which is very, very, very rare. As a beginner, your first client was $5,000. Yes, $5,000. You can basically go on my Instagram, and I've posted a lot of insights about this. My Instagram is Yash Patvekar, as my name is. So what has happened is I closed my first client for $5,000, and before that, bro, my journey was basically that I was a normal kid, or 18-19-year-old kid. I did not have any money in my background. And that kind of money hitting my bank account, I was stumbled. So my first client literally gave me the push to go ahead. And why did that happen? We just not focus on my income and what money I make. But what literally triggered that was, the valuable follow-ups that I did with the client. A lot of people right now also struggling with, getting prospects and clients. I would just like to say that the money is into the follow-ups, guys. You will DM a lot of people on a day-to-day basis, but how many will you follow up with and how much of value will you provide to them? That is what determines at the end of the month that how many clients you are going to sign. सो यश भाई, जैसे आपने बताया आपके फर्स्ट क्लाइंट के बारे में, स्टोरी बहुत ही सही रही एंड लाइक ये चीज़ सुन के बहुत अच्छा लगा कि आपने अपना फर्स्ट क्लाइंट $5,000 का क्लोज़ किया. एंड लाइक $5,000 का क्लाइंट क्लोज़ करना लाइक एक न्यूबी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, बट कहीं ना कहीं आप में कुछ है. तो अभी तक जैसे आपने फर्स्ट क्लाइंट ही अपना $5,000 का क्लोज़ किया, तो अभी हम ये जानना चाहेंगे, मैं नहीं, हमारी जनता ये जानना चाहेगी, ऑडियंस ये जानना चाहेगी कि अभी तक का आपने हाईएस्ट 1 मंथ का आपका रेवेन्यू कितना गया है, अगर आप शेयर करना चाहें तो. Definitely. There's nothing to hide from. I am open, to share anything, because I want, more and more people learn about this field. I want more and more people to know about this field and, get into this field, because this field is very privileged according to Absolutely. Yeah, we'll speak only logic.
the most money that I have made in a month is 8 nanos, what we call this, and 8 nanos is basically 8 lakh rupees in a month. That is almost $12,000, I guess, according to today's USD INR rate. And that was achievable after 2 years of, struggling 2 years. I got clients here and there, but I actually got the proven process to basically get consistent clients on a month-on-month basis. And my highest month has been $12,000, yes. वाओ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। लाइक आपने जो अपना ये रेवेन्यू शेयर किया ना, इससे मतलब लोगों को ना एक मोटिवेशन मिलती है। एंड कुछ लोगों को आज भी ऐसा लगता है, इन 2022 लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब डिजिटल मार्केटिंग से नहीं हो सकता या फिर ये सारी चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। तो दिस इज़ द लाइव एग्जाम्पल गाइज, आप लोग देख सकते हैं कि यार लोग कर रहे हैं, करने वाले कर रहे हैं। अगर आप भी यार मेहनत करोगे, अगर आप भी डिजिटल मार्केटिंग स्पेस में आना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो डू इट। एंड इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट के अंदर में हम ये भी शेयर करने वाले हैं आप सबके साथ में कि आप कैसे आ सकते हैं इस फील्ड में, आप कैसे डिजिटल स्पेस में कुछ कर सकते हैं। तो गाइज इस इंटरव्यू में अंत तक बने रहें। एंड सर, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लाइक आपकी स्टोरी तो बहुत शानदार रही, आपने बहुत सारी चीज़ें की अपनी लाइफ में, लेकिन सबकी लाइफ में ना एक टर्निंग पॉइंट भी आता है, सबकी लाइफ में एक डाउनफॉल भी आता है। तो आपको भी यार, जब आपने कहा कि आप 8 नैनोज मतलब 8 लाख रुपीज़ पर मंथ आप अर्न कर रहे हैं, तो इसमें आपको भी यार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ ना कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा होगा। तो कुछ ऐसे चैलेंजेस आप अगर जनता के साथ में या हमारे साथ में शेयर करना चाहें जो आप फेस करना पड़ा आपको। Definitely. Once there is progress, Chetan bhai, there are definitely a lot of challenges. As I told you, कि हम तो trial and error से ही सीखे हैं. Try Definitely. something, there is an error. Again we try something new, we fail. So जब इतना सारा काम बढ़ा, तो obviously delivery में भी बहुत तकलीफ आई. There was a lot of challenges that I went through when delivering. Getting clients is one thing, delivering to them is another challenge. So once I started getting a lot of work. My first client was a doctor in the US who was able to pay me that money. Then I got a lot of clients who were chiropractors. Then I got a lot of clients who were basically selling an online coaching, basically brain optimization coaching, selling trading coachings, how to invest in the stock market. So delivering for them was a task. So starting out that I had a lot of problems in delivery, but slowly they say, right, as you fall, you learn how to get up and do better things. So a downfall is actually very important. According to me, a downfall is very important for the graph to go back up again, because the downfall will teach you a lot of things which the success won't. So absolutely, what had happened is I got a harsh feedback from the clients that the delivery was not up to the mark. People were getting leads, people were getting a lot of conversions, but not up to the mark. So I would only suggest, when we fall into the pit and you have money to invest into someone, invest into a mentor who has done this for a lot of repetitive time, because that person has already gone through all of these things that you are going through. It will 99% of the problems will be basically diminished once you invest in a mentor who has done this over and over and over and over again. So I got in touch with one of my mentors, one of my coaches that basically taught me how the delivery works. I hired another person for me who was more of an expert in the delivery than me, because my job as an entrepreneur is to make smarter people work for me. I am basically good at that. So I convinced the other person to basically do the delivery work, and I paid him definitely well for the work that he did. And basically two things happened. My clients got the delivery and I got to learn how to do the delivery. So that was basically the key. एब्सोल्युटली। बट ये बताएं कि लाइक आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग की इतनी सारी एजेंसीज़ हैं। लाइक अगर आप कहें तो आज की डेट में तो डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसीज बहुत सारी हैं। मतलब हर दूसरा बंदा डिजिटल मार्केटिंग में धीरे करके आना चाह रहा है एंड कर रहा है, अच्छा कर रहा है। देन वाई यश पटवेकर? मतलब आपने अपने आप को कॉम्पिटिटर से कैसे डिफ्रेंशिएट किया? क्या आपने अपने अंदर में ऐसा प्लस पॉइंट्स एंड क्या ऐसे आपने अपने अंदर में ना ऐसे क्या पॉइंट्स आपने ऐड ऑन किए जिस कारण से आप अपने आप को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं उनसे, अपने कॉम्पिटिटर्स से? See, basically ये business 2 साल से करते हुए what I have understood is a lot of people are getting into digital marketing, and I'm very happy for that. People are understanding the business. People are able to get
the US economy into the Indian economy and basically get our trade right. I am very happy about all these things. But what I have understood, why did I get clients? I am still figuring out, Baba, how am I getting clients? Firstly, I do not think about competition at all. I keep working, I keep following the process that was proven to me that made me money. So I will keep following the process that made me money in the prior. So that will make me money in the future as well. What is the process? I am trying to figure out even now. But what I am assuming right now, that what helped me to get these clients, that I basically made a connection, a relationship with my prospects. I over-delivered them with value. I basically showed my first client that I'll talk about. I basically showed her, she was a doctor. So I basically showed her that how other clinics, with the help of Facebook ads, are leveraging the business to the heights, which is beside her locality. While you are basically falling down the space. And once I have built that trust, once I have built that rapport, and once I have over-delivered them with a lot of value about how digital marketing is affecting with a plus point to other businesses and how the same could be done for you, that is the thing I think, that is what has moved the needle for me. And that is why, clients basically fall into my plate and I'm able to serve them. वेरी ग्रेट आपने बहुत सही चीज़ बताई एंड बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के. बट अब हमारी जो ऑडियंस है ना, वो ये जानना चाहती है कि वो कैसे इस फील्ड में आ सकती है. आप अगर उनको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे पाएँ या उनको कुछ सजेशंस दे पाएँ कि कैसे वो एंटर कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग स्पेस पे. सो बेसिकली YouTube, I feel, has the most unorganized, half-uncooked knowledge which is provided on YouTube. So, watching a lot of YouTube videos not in sequence, I feel, according to me, put me into a lot of confusion. Or, according to me, if you want to get into digital marketing, if you want to get into the marketing field, I would definitely say invest into a mentor who is basically doing this for a lot of period of time, who is successful into this field. Follow that person's footprints and basically 99% of your obstacles will be diminished automatically because you are going to follow a proven process. See, there are two ways to start a digital marketing agency: that see hundreds of YouTube videos and reach out nowhere, because these are not organized. If we see, there is a lot of information available on YouTube, but it is not in sequence, it is not organized. Some techniques, Chetan Bhai, will basically be very helpful for you, but it won't be helpful for me. So, what is happening, that if I am a newbie right now and I want to get into digital marketing, I will literally invest into a mentor. It will be an investment for me, like how we go to college to learn things, get a degree, and then go out for a job. Same thing. I will basically learn from a mentor who's doing it over and over again successfully. I will basically follow his footprints so that I am on the path which is not wrong, which is not on the trial and error path. I am on a path which is a proven path, which teaches me to get clients from point A to the delivery of point Z in a systematic manner. गॉट इट. मैं भी इसमें एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा. जैसे आपने ये कहा ना कि हमें अपने आप को एक मेंटोर फाइंड आउट करना चाहिए, कि एक मेंटोर हमें सारी चीज़ें ट्रेन करें. आज की डेट में जो अमीर से अमीर व्यक्ति है ना, आज वॉरेन बफेट है, बिल गेट्स हैं, कोई भी है, वो लोग डेली बुक्स पढ़ते हैं. और ये ज़रूरी नहीं है कि यार आपको एक फिजिकल मेंटोर होना ज़रूरी है. आज की डेट में डिजिटली भी इतने सारे लोग हैं ना जिनसे आप चीज़ें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं. आप लोगों के कोर्सेज बाई कर सकते हैं. अगर आप कोर्सेज ना भी बाई करें, आप उनकी वीडियोस देखें. अगर आपको वीडियोस भी नहीं करना, आप उनकी बुक्स पढ़ सकते हैं. आज की डेट में नॉलेज हर जगह बिखरी हुई है, बस आपको बटोरना आना चाहिए. और दूसरी चीज़ ये है कि यार आज की डेट में हर से बड़ा व्यक्ति भी ना बुक्स पढ़ता है. बिकॉज यार खुद गलती करके सीखोगे ना, इससे अच्छा दूसरों की गलती से सीखो, आप जल्दी आगे बढ़ पाओगे. तो ये चीज़ आपने बहुत सही कही. वेरी गुड. सो नाउ सर, अब जैसे आपने कहा कि यार एक मेंटोर अपने को फाइंड आउट करना चाहिए यश भाई, तो अब आप बताएं कि आपका जो इंस्पिरेशन या आपके जो मेंटोर हैं जिन्होंने आपको हेल्प किया आज यहाँ तक पहुँचने में, तो आप उनके बारे में थोड़ा सा बताएं. So basically, my mentor helped me to get my first client. Helped me, basically to have the delivery to the client.
एंड ऐसा नहीं है कि आई लर्न फ्रॉम वन सिंगल मेंटोर, आई लर्न फ्रॉम एक्चुअली अ लॉट ऑफ मेंटर्स इन माय डेज ऑफ स्ट्रगलिंग, इन माय डेज ऑफ एसएमएमए, एंड मुझे बहुत सारा नॉलेज उनसे डिफरेंट वेज से मुझे पता चला, बिकॉज one type of mentor basically taught me about how the outreach should have been done. The second mentor basically taught me how the delivery should have been done. The third mentor told me that how do I get those clients on a recurring income basis. So there was not one single mentor which helped me. There was a lot of mentors that helped me to basically reach where I am now. And discussing one-on-one about them, would take a lot of time, because what they have taught me is top notch quality. And what I have done is basically whatever money I have earned through digital marketing, I have reinvested it in myself. I have reinvested the money into getting a new person who's doing even better than the last coach, I mean. So I've always been invested into a mentor who pushes me to level up my game. एब्सोल्युटली लाइक मैं भी मतलब रेगुलरली हम लोग बुक्स को स्टडी करते रहते हैं, एंड नए कोर्सेज एंड नए मेंटोर से हमें लाइक नॉलेज लेती रहनी चाहिए. इस कारण से ही हम अपने आप को जितना पुश करेंगे ना उतना ज़्यादा हम ग्रो कर पाएंगे. अगर हम एक कंफर्ट जोन में घुस के बैठ जाएंगे ना कि यार अब तो पैसे आ रहे हैं, अब तो यार हम कमा रहे हैं, अब क्यों अपने को इतना मेहनत करना या क्यों नई चीज़ें सीखना, तो यार आप ग्रो नहीं कर पाओगे, आप धीरे धीरे नीचे गिरने लगोगे. तो यार रेगुलर अपने आप को अपडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं. यही तो हुआ था मेरे साथ, मतलब चेतन, when I had made 2-3 lakh rupees on a month-on-month basis consistently, I started feeling like I have cracked the code of money. I went into the state of alligator success. You have seen an alligator. Basically, if he gets food on a day, then for the rest of the 1 week he doesn't fight for food. He is basically very lazy and in his comfort zone. So मेरे साथ भी हुआ था. Once I started earning 1 lakh 2 lakh rupees per month, I was feeling like भाई अभी तो कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, and everything will go nicely. I have all the luxuries. I can spend money. I can have everything on my plate, whatever I want. In India 2 lakh rupees 3 lakh rupees per month income बहुत है. But then I understood if only 2 to 3 lakh rupees is the seeding that I am creating for myself, then इसके ऊपर तो मैं कभी जाऊंगा नहीं. I am going to fall below this. So negative mindset फिर हो जाता है कि बाबा 3 lakhs के ऊपर तो मैं कभी जाऊंगा ही, which is not a very good sign. हमें ऐसे लगने लगता है कि यार हम इतना कमा रहे हैं, मतलब हमारे जो सराउंडिंग है उधर में कोई इतना अर्न नहीं कर रहा है, तो हमें लगता है हम ही राजा हैं. लेकिन जब हम घर से बाहर निकलते हैं ना, जब हम बाहर निकल के लोगों को देखते हैं, पहचानते हैं, अगर हम नई जगहों में जाते हैं, तब हमें पता चलता है यार ये तो कुछ नहीं है. 2-3 लाख रुपए कमाना इज़ नॉट अ बिग डील. ये इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं है. लोग बहुत कमा रहे हैं, कमाने वाले यार इतना कमा रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते. तो मतलब रेगुलरली अपने आप को अपडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Absolutely, Chetan. I'll tell you, my mentors who are in the US are doing more than 5 crore rupees per month at the age of 24-25. Can you imagine? ये पैसा तो हमने कभी देखा भी नहीं है. Absolutely. Per month. मतलब इतना तो यार अगर कोई साल का भी कमा रहा है तो वो राजा अपने आप को समझता है, लेकिन यहाँ पर लोग महीने का इतना कमा रहे हैं. Absolutely. ये चीज़ होती है. मतलब स्टार्टिंग में मेरे को भी ऐसा लगता था ना, जब मैं धीरे धीरे मतलब मैंने स्टार्टिंग में एफिलिएट मार्केटिंग भी स्टार्ट की थी, एंड उधर में क्या था कि जो हमारे पूरे टीम थे और जो हमारी कंपनी थी उसमें हम टॉप अर्नर रहते थे, हमेशा टॉप अर्नर रहते थे. तो हमें ऐसा लगता था कि यार हम बहुत कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं. लेकिन जब बाद में जब हम और लोगों से मिलना स्टार्ट किए, आज आपसे मिलना हुआ, पिछला इंटरव्यू हमने मनीष भाई के साथ में किया था, उनसे मिलना हुआ, तो जब ऐसे नए लोगों से मिलना हो रहा है, नई चीज़ें सीखने को मिलती है, तब पता चलता है कि यार यू आर नथिंग. अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, अभी तो ये शुरुआत भी नहीं है. So that's शुरुआत है. I would just like to I just heard a quote today and which is Chetan. How big would you dream if you knew that you would never fail in your life? How big? You tell me, Chetan. How big would you dream if you knew that you would never fail in your life? एब्सोल्युटली. अपने को बहुत बड़ा सोचना चाहिए. मतलब अगर यार हम सोचेंगे नहीं तो करेंगे कैसे. Absolutely, man. Failure and success, I feel, are a part of life. I feel failure is very important because वो हमें एक humble person बनाता है. It teaches us the values of life. Success, is a lot of
ईगो बूस्टिंग टूल बहुत कि भाई मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ. But by failure teaches you how to be a very humble, down to earth person. And I feel failure is the next chapter, that a person should basically go through in order to value success. एब्सोल्युटली. तो अब यश भाई, अब आप हमें ये बताएं कि यार आपका फ्यूचर गोल क्या है. अब आप यार बहुत अच्छा कर रहे हो ऑलरेडी, लेकिन यार हमें यहाँ पर रुकना तो है नहीं, अभी हमें तो बहुत आगे जाना है. तो अभी आप क्या सोच रहे हो, आपका फ्यूचर गोल, आपका विजन क्या है, अब क्या करने का प्लान है आपका? Basically, see, now what I have planned for the future goals. Basically, you cannot say future goals. I am basically, living my goal on a day-to-day basis. मेरा अभी गोल ये है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा I basically educate a lot of people on a day-to-day basis about digital marketing and how you can get basically the US economy into India and basically, target the Indian economy to, go ahead. Because I'll tell you one thing, getting the US dollars and pounds into India is a far bigger privilege that you're doing to India than any other job. There is no GST at all I have to pay. The government gives you so much of benefits because you are getting their money into our country. And my goal on a day-to-day basis is to basically teach a lot of people about how digital marketing is, get them out of the mindset of a traditional rat race, a 9-to-5 job. Basically, a lot more can be achieved. It is just, that our mindset only keeps us behind. Absolutely. So guys, agar... Yeah, you can. Living my goal right now, that I am teaching a lot of people how to basically start a digital marketing agency. Because, money will come and go. But if I am able to make an impact in someone's financial life, that person is basically going to remember me for his entire life. You will agree with that, Chetan. Absolutely, I agree with you. Yeah. सो गाइज़, अगर आप में से कोई भी सोच रहा है ना कि अपने को डिजिटल स्पेस में कुछ करना है, डिजिटल मार्केटिंग करनी है, सो यू कैन डेफिनेटली गो टू यश भाईज इंस्टाग्राम अकाउंट, लिंक इन डिस्क्रिप्शन. आप वहाँ जाके उनको डीएम कर सकते हैं, उनसे चीज़ें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं. एंड मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि यार यश भाई आपको यार जो भी चीज़ें सिखाएंगे ना, वो अपने एक्सपीरियंस से और इतना जो उन्होंने अपना टाइम एंड मनी इन्वेस्ट किया है, वो सारी चीज़ों का निचोड़ वो आपको देने वाले हैं. सो यू कैन डेफिनेटली गो एंड कॉन्टैक्ट हिम. एंड यश भाई, अब आपसे एक फाइनल क्वेश्चन, एक बहुत बड़ा हमारा इंटरव्यू हो चुका है. आई थिंक आई वैल्यू योर टाइम. एंड यश भाई, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक एडवाइस, एक फाइनल एडवाइस जो आप देना चाहें हमारे यूथ को कि उनको अब क्या करना चाहिए या कैसे ग्रो करना चाहिए, एक एडवाइस आप देना चाहें. So basically, whatever anyone is doing into their job or into their business, anyone who is starting up, first of all, jobs will only pay your bills. And the businesses will basically pay for your luxuries. So anyone who is starting up thinking of business, मुझे उनको basically यही advice देना है कि make sure that you set up your process pipeline from point A to point Z as soon as possible, because that will basically help you to exactly find out where is the leak and where is the fixture correct. So for example, I tell you, God wills, Mukesh Ambani gets a lot of life. But if tomorrow Mukesh Ambani even dies, Reliance is not going to basically close down, because he has set a process of pipeline from point A to point Z. That the service will be, given to the customers, the money will keep coming into his bank account. So what are basically big people, या एब्सोल्युटली ये बात आपने एकदम सही कही. दैट यार हमें ना एक पूरा का पूरा पाइपलाइन बनाना है अपने बिजनेस में कि यार कल को अगर हम मतलब एक्टिवली अपने वर्क को ना भी कर पाएँ, कल को यार हमारा शरीर को कुछ भी हो सकता है, कल को यार किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया, लेकिन आपका बिजनेस कभी नहीं रुकना चाहिए. आपको अपने बिजनेस को ऐसा प्रॉपर ऑटोमेट करना है कि यार आप लाइफ लॉन्ग अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएँ, आप रहे ना रहे, आपका बिजनेस चलता रहे. सो गाइज, बहुत अच्छा लगा आज सर के साथ में इंटरव्यू करके. यश भाई, बहुत अच्छा लगा यार, आज आपने बहुत सारी चीज़ें शेयर की. एंड ऑडियंस को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा. ऑडियंस प्लीज़ कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स कि आपको कैसा लगा, क्या क्या चीज़ें आपने इस पूरे इंटरव्यू से सीखी, प्लीज़ हमें बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर में. एंड यश भाई, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग एंड फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू अस. थैंक यू सो मच वंस अगेन. थैंक यू सर. थैंक यू.